हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे राइट्स 2026 की जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक थर्ड एडवांस एक्सेल में पाइवोट टेबल चार्ट्स एंड डेटा वैलिडेशन के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें 23 चैप्टर 2000 प्लस एमसीक्यूज कवर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल चार्ट एंड डेटा वैलिडेशन के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है इन चार्ट्स व्हाट डज द एक्स एक्सिस यूजुअली रिप्रेजेंट। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, डेटा लेबल्स, कैटेगरीज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एग्रीगेटेड वैल्यू। तो करेक्ट आंसर है थर्ड categories or independent variable because x axis show categories or independent variables. Next, second, which function is automatically used when a pivot table field contain text value? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट sum, average, max, count। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ count because excel default to count when non numeric data is used. Next, third, what happens when you drag the same field twice into the value area of pivot table? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इट कॉज एन एरर, सेकंड इट ओवरराइट द प्रीवियस फील्ड, थर्ड इट अलाउ मल्टीपल एग्रीगेशन एंड फोर्थ इट डिलीट्स द फील्ड। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इट अलाउज मल्टीपल एग्रीगेशन, दैट इज सम एंड काउंट, बिकॉज you can apply different aggregation method to the same field. Next, fourth, which features allow grouping of dates into month or quarter in a pivot table? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ग्रुप, फिल्टर, सॉर्ट, कंसोलिडेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ग्रुप बिकॉज ग्रुप फीचर हेल्प कैटेगराइज डेट फील्ड इनटू मंथ, क्वार्टर, एक्सेट्रा। Next, fifth, in pivot tables, grand total can be turned off from which tab? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंसर्ट, डेटा, डिजाइन, व्यू। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डिजाइन बिकॉज ग्रैंड टोटल आर कंट्रोल अंडर द डिजाइन टैब। नेक्स्ट, सिक्स्थ, which chart type is not supported directly from pivot chart? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ स्कैटर चार्ट बिकॉज पाइवोट चार्ट डू नॉट सपोर्ट एक्स वाई, दैट इज स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट, सेवंथ, अ पाइवोट चार्ट इज डायरेक्टली लिंक टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रॉ डेटा सेट ओनली, सेकेंड पाइवोट टेबल, थर्ड एक्सटर्नल डेटाबेस एंड फोर्थ वर्कशीट फॉर्मेटिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड पाइवोट टेबल बिकॉज पाइवोट चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइवोट टेबल। नेक्स्ट, वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रेशिंग अ पाइवोट टेबल? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिलीट ओल्ड डेटा, सेकंड अपडेट इट विद द लेटेस्ट सोर्स डेटा, थर्ड फॉर्मेट्स डेटा ऑटोमेटिकली एंड फोर्थ रिमूव फिल्टर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड update it with the latest data source because refreshing ensure the pivot table reflect updated source data. Next, ninth, in data validation which option restrict entries to a predefined list? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कस्टम, होल नंबर, लिस्ट, टेक्स्ट लेंथ। तो करेक्ट आंसर है थर्ड लिस्ट बिकॉज लिस्ट ऑप्शन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन फॉर वैलिड एंट्रीज। नेक्स्ट, 10th, which formula can be used in data validation that is custom to allow only even number? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्वल्स टू मॉड a1 कॉलम कॉमा 2 इक्वल्स टू, मतलब a1 को डिवाइड बाय 2 तो रिमाइंडर 0। तो इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज मॉड फंक्शन चेक डिविजिबिलिटी बाय 2। नेक्स्ट, 11th, what happens if invalid data is entered despite data validation rule? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेल क्रैश, सेकंड इट इज ऑलवेज रिजेक्टेड, थर्ड इट मे बी अलाउड बेस्ड ऑन एरर अलर्ट सेटिंग एंड फोर्थ इट इज ऑटो करेक्टेड। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इट मे बी अलाउड बेस्ड ऑन एरर अलर्ट सेटिंग बिकॉज एरर अलर्ट कैन बी सेट टू स्टॉप वार्निंग और इंफॉर्मेशन।
Next 12th, which features allow dynamic filtering of pivot table with buttons? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टाइमलाइन, स्लाइसर, फिल्टर, सॉर्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड स्लाइसर. स्लाइसर प्रोवाइड इंटरैक्टिव फिल्टरिंग बटन. Next 13, in Microsoft Excel, which area of pivot table determine how data is aggregated, that is sum and count function? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिल्टर, कॉलम, वैल्यू, रो. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वैल्यूज, बिकॉज वैल्यूज एरिया डिफाइन हाउ डेटा इज समराइज इन सम, काउंट, एवरेज, एक्सेट्रा. Next 14, which chart is best for showing trends over time? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड ड्रॉप नट चार्ट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड लाइन चार्ट. लाइन चार्ट इफेक्टिवली शो ट्रेंड्स. Next 15, what is the purpose of calculated field in pivot table? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मॉडिफाई सोर्स डेटा, सेकंड क्रिएट न्यू डेटा बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फील्ड, थर्ड डिलीट फील्ड एंड फोर्थ सॉर्ट डेटा. तो करेक्ट आंसर है सेकंड क्रिएट न्यू डेटा बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फील्ड, बिकॉज इट अलाउज क्रिएशन ऑफ न्यू फील्ड यूजिंग फॉर्मूला. नेक्स्ट 16, which limitation applies to pivot table? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैन नॉट हैंडल लार्ज डेटा सेट, सेकेंड कैन नॉट यूज फॉर्मूला, थर्ड कैन नॉट डायरेक्टली एडिट समराइज वैल्यू एंड फोर्थ कैन नॉट रिफ्रेश डेटा. तो करेक्ट आंसर है थर्ड कैन नॉट डायरेक्टली एडिट समराइज वैल्यू, बिकॉज pivot table value are summarized and cannot be edited directly. Next 17, in data validation which setting restrict input length? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट होल नंबर, डेसिमल, टेक्स्ट लेंथ एंड लिस्ट. तो करेक्ट आंसर है थर्ड टेक्स्ट लेंथ, बिकॉज टेक्स्ट लेंथ लिमिट नंबर ऑफ कैरेक्टर. नेक्स्ट 18, which chart element explain the meaning of color or data series? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सिस, लीजेंड, ग्रिड लाइंस, टाइटल. तो करेक्ट आंसर है सेकंड लीजेंड्स. लीजेंड आइडेंटिफाई डेटा सीरीज. नेक्स्ट 19, what happens when source data is deleted but pivot table is not refreshed? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट pivot table update automatically, second old data may still appear, third Excel delete pivot table and fourth error is shown immediately. तो करेक्ट आंसर है सेकंड old data may still appear because pivot table retain cache data until refresh. Next 20, which feature help highlight specific data point in chart dynamically? देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा लेबल्स, ट्रेंड लाइन एंड एक्सिस स्केलिंग. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिकॉज कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी यूज्ड विथ लिंक डेटा टू एम्फसाइज वैल्यूज. ओके, वैसे देखिए कंप्यूटर नॉलेज के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, जीके बैंकिंग की पीडीएफ अवेलेबल है, अकाउंट एंड फाइनेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.